पिछले रियल नंबर्स की वीडियो में हमने जाना था दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स प्रेजेंट इन अ नंबर सिस्टम एंड कैसे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट एचसीएफ ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो आज हम उसी चैप्टर के एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड ऑल्सो रिलेटेड एग्जाम्पल्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So before starting with the examples, let us find out what this theorem 1.2 fundamental theorem of arithmetic states. It says that every composite number can be expressed, factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. So ये theorem जानने से पहले we must know what are prime numbers and what are composite numbers. So let's start with prime numbers. Prime numbers are those numbers which are only divisible by 1 and the number itself. So what does this mean? It means कि कोई भी number अगर 1 और अपने आप से ही divisible होगा तो वो prime number है। Divisible का मतलब that अगर हम उस number को किसी से भी divide करें तो remainder 0 आना चाहिए। तो इस हिसाब से prime numbers only has two factors, okay, 1 and number itself. Now, what are composite numbers? So composite numbers are those numbers which are having more than two factors. Okay, these are completely opposite to prime numbers. अगर हम example लें, let's take 10. तो 10 के अगर हम prime factors निकालें, तो इसके factors निकलते हैं 2 and 5, and of course 1. So it has having more than two factors. That means it is a composite number. So ये theorem क्या कहती है? This theorem state that every composite number can be expressed as a product of prime, irrespective of the order of the primes. मतलब एक number है हमारा composite number 10, उसको हम prime factors के multiplication के form में लिख सकते हैं। जैसे अगर हम 10 को लिखना चाहें, तो it can be written as 2 into 5. Okay, that means a particular composite number can be written as a product of primes, and it doesn't matter what the order of primes is. Like अगर हम 10 को 5 into 2 भी लिखें, it won't affect the equation. So this is 1.2 theorem. I hope आपको समझ आ गया होगा. So आइए आगे बढ़ते हैं. Now this is example 6 of your NCERT books. So in this example, you have to find HCF of 96 and 404 by prime factorization method, and hence we have to find their LCM. So अब हम HCF कैसे find out करेंगे? So first of all, जो भी आपको दो numbers दिए हैं उन्हें आप नीचे लिख लीजिए and express them as the product of their prime numbers. Okay. So for that you have to find out the prime factors for them. So अगर हम 96 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, so 248, 224, 212, 26, 23, 31. So 1, 2, 3, 4, 5 and this 3. So 96 is 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 3. So हमने क्या किया है अभी? We have just expressed 96 as a product of its primes. Okay, prime factors निकाल लेने हैं and we have to write it in the below form. Now अगर आप 404 के prime factors निकालेंगे, so it will be like 2 into 2 into 101. Okay, so what are the HCF? HCF is the highest common factor. So you have to just select the common factors of these two numbers. This 2 is common with this 2 is common with this. बाकी कुछ common नहीं है, तो HCF is 2 into 2, which is 4. Okay, so HCF of these two numbers is 4. Now we have to find the LCM, and here they have written hence their LCM. Hence, so hence का मतलब है finding out the HCF, and using that you have to find the LCM. So there is a formula that product of two numbers is equal to the product of its HCF and LCM. Okay, so here we can write it as 96 into 404 equals to 4 into LCM. Okay,
अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है एलसीएम के साथ, सो दूसरी साइड जाके इट विल गेट डिवाइडेड. सो 96 into 404 by 4 is equal to the LCM. So if you will simplify it, you will get 96 into 101. अगर आप इसे मल्टीप्लाई करके आंसर निकालेंगे, so the LCM would be 9696. ओके, सो जब भी आपको LCM निकालना दिया हो एंड क्वेश्चन में लिखा है हेंस फाइंड इट्स LCM, सो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है दैट द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स इज इक्वल टू द HCF एंड LCM's प्रोडक्ट. ओके, like A into B, these are the two numbers A and B, is equal to HCF into LCM. Okay, I hope आपको समझ आ गया होगा. चलो आगे बढ़ते हैं for next question now. Now this is the sixth question of exercise 1.2. Here we have to explain that why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. तो यहाँ पे आपको दो numbers दिए हैं, this one and you have to prove why these are composite numbers. पहली बात आपको ये याद रखना है कि कोई भी अगर नंबर कॉम्पोजिट है दैट मीन्स इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, अगर किसी भी नंबर के 2 फैक्टर्स से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. तो जो भी आपकी इक्वेशन है, अब हमें उसे अब इन दो इक्वेशंस को हमें इस तरीके से लिखना है दैट इट कम्स आउट टू हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. ओके, वील स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट वन हियर इज 7 into 11 into 13 plus 13. अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है? 13. So we will take out 13 as common. 7 into 11 into 1 plus 1. Okay. Now 7 into 11 into 1 is 77 and plus 1. Now 13 into 78. Okay. अब हम 78 के फैक्टर्स निकालेंगे. तो अब हमें 78 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स रिप्रेजेंट करना है. तो अगर आप इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो यू विल गेट 2 into 3 into 13. Okay, now this whole equation would be 13 into 2 into 3 into 13, which is अगर हम इसको ascending order में लिखे फैक्टर्स के तो 2 into 3 into 13 raised to power 2. अब इसी इक्वेशन से आपको पता चल रहा है दैट इट इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, राइट? 2 है, 3 है, 13 है, 3 फैक्टर्स आर देयर फॉर इट. सो दैट मीन्स इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. For next equation now, this is 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5. यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं हमारे पास. ओके, सो यहाँ अभी हमारे दो टर्म्स हैं. अब हम इसमें से 5 कॉमन निकालेंगे. सो हियर 5 कॉमन निकालने के बाद यहाँ बचता है 7 into 6, इधर 1 बच जाएगा, into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1. Okay, now if you will solve the bracket, you will get 1008. Okay, plus 1. Now you will get 1009 into 5. Okay, अभी आप देख रहे हो, so it is having more than 2 factors. That means it is a composite number. Now next question, question number 7 from exercise 1.2. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? So in this question में क्या दिया गया है? That there is a circular path. Sonia takes around 18 minutes to complete one round, this particular round, okay, from the starting point, and Ravi takes 12 minutes to complete that round. अब हमें ये पता लगाना है that if both of them start from the same point and at the same time and move in the same direction, तो वो कितने टाइम बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे. तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट LCM ऑफ टू गिवन नंबर्स. क्यों? बिकॉज LCM इज द ओनली factor which is used in comparing two or more numbers to find out the smallest number that is multiple of both of them. अब एक LCM एक ऐसा नंबर है जो सबसे छोटा नंबर है और दोनों गिवन नंबर्स का मल्टीपल है.
अगर हम इसी क्वेश्चन को दो छोटे नंबर्स की हेल्प से अंडरस्टैंड करना चाहें, so let's say that Sonia takes 3 minutes while Ravi takes 2 minutes. Okay, now this is the circle. Now this is the circular path. Sonia, if starts from here, 3 minutes के बाद वो यहाँ पहुंचेगी, correct? And then second round वो start करेगी. After 3 minutes वो पहुंचेगी, correct? That means total 6 minutes के बाद वो starting point पे पहुंची है. और अगर हम रवि को देखें, so he starts from here, he takes 2 minutes to complete one round. अगला चक्कर वो फिर लगाएगा. He will take another 2 minutes to complete the second round, which is total 4 minutes now. And अगला वो फिर से चक्कर लगाएगा and he will take another 2 minutes. That means total 6 minutes. So after 6 minutes वो भी starting point पे पहुंच जाएगा और after 6 minutes ये भी starting point पे पहुंच जाएगी. फर्क सिर्फ इतना है, इसको 2 rounds लगाए और रवि ने 3 rounds लगाए. So अगर हम देखें 2 और 3 का LCM क्या रहता है? 6. That means इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए you have to find out LCM of two given numbers. तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से अब जाएं, so आपको 18 and 12 का LCM find out करना है and that LCM would be the answer to this question. So LCM of these two numbers is 36. So answer is after 36 minutes, both of them will meet at the starting point. I hope आपको ये समझ आ गया होगा. Thanks for watching and मिलते हैं अगली वीडियो में.